When we talk about measure of inflation, there are two measures of inflation. It was a 2-mark question, and the answer they were looking for is you saying CPI, yani Consumer Price Index, that's known as CPI, or Retail Price Index. Price Index जो ये वर्ड यूज हो रहा है CPI और RPI में, ये एक मैथमेटिकल तरीका है जो हमारे लिए एक तरीके से चीज़ों को आसान कर देता है. लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये CPI है क्या असल में, प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है. टेक अ लुक एट द नंबर्स ओवर हियर. 3 countries are given with different years. Years start हो रहे 2003 से all the way they going to 2011 for Malaysia, Mauritius and Pakistan. CPI के indexes निकाले हुए हैं. इंडेक्सेशन के मेथड के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट एक बेस ईयर, जिसको हम बोलते हैं एक बेस पीरियड, सेलेक्ट करती है और उस बेस ईयर को एक वैल्यू दे देते हैं 100 का. तो यहां इस डेटा के अंदर बेस ईयर है 2005, यह हमारा कंपेयरिंग ईयर है. तीनों कंट्रीज की इन्फ्लेशन के CPI को हमने 100 बता दिया. अब नाउ इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन. इफ यू हैड अ गुड विद अ प्राइस ऑफ 100 and there was 12% inflation, so what should be the price of that good? 100 का गुड है और उसके ऊपर 12% इन्फ्लेशन आई है, तो उस गुड की प्राइस 112 होनी चाहिए. वेरी इजी टू कैलकुलेट बिकॉज 100 पे 12% इज 112. लेकिन अगर एक गुड है जिसकी प्राइस है 85 और अब उस पे 5% इन्फ्लेशन लग जाती है, तो द थिंग इज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टेल द नंबर एंड इट्स नॉट 90. ठीक है, 85 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर अगर मैं 5% इन्फ्लेशन लगाता हूं तो प्राइस ऑफ दैट गुड विल बी 89.25. Without calculator I would not have been able to solve that. तो ये 100 की वैल्यू हमारे लिए चीज़ें बड़ा सिंप्लीफाई कर देती हैं. अब देखो, so we're asking ourselves, okay, for Malaysia, let's look at the numbers. Malaysia की 2005 which was a base year, 2005 से 2006 में कितने परसेंट इन्फ्लेशन आई? वेरी इजी टू कैलकुलेट, 3.6% इन्फ्लेशन आई है. मॉरिशस में कितनी आई है? वेरी इजी टू कैलकुलेट, 8.9% इन्फ्लेशन है. और पाकिस्तान के अंदर 7.9% इन्फ्लेशन. सो फ्रॉम 2005 to 2006 the best performing country was Malaysia and worst performing country was Mauritius. However, when I'm looking at the CPI के numbers and I look at 2005 से 2007, it went from 100 to 105.7. So what it's telling me is कि in Malaysia 2 साल में 5.7% इन्फ्लेशन आई है. So when you have a base year to compare, अब हमें पता ये लगता है कि 2 साल में 18%, 2 साल में 16.1%. ठीक है जी. पाकिस्तान में इफ़ आई वॉज टू आस्क कि ये बताएं 5 साल में कितनी इन्फ्लेशन आई, तो 1, 2, 3, 4, 5. मलेशिया में 14% आई है इन्फ्लेशन, मॉरिशस में 37.2% आई है और पाकिस्तान में 80% आई है. डू अंडरस्टैंड? यू कंपेयरिंग विद द बेस ईयर कि कितने साल में कितनी परसेंट आई हैं. दैट्स व्हाट इंडेक्सेशन इज टेलिंग अस. If the question was in this
period from 2005 to 2011 which country performed the best and which one performed the worst, ये इन्फ्लेशन रेट्स तुम्हें पूरे इस पीरियड के तुम देख के फ़ौरन से बता सकते हो कि द इन्फ्लेशन रेट of Pakistan is ridiculous. It's 102.3. What it is really telling us is कि 100 से 200 पे जाने का मतलब है कि प्राइसेस जो है वो डबल हो गई हैं. अगर ये अगले लेट्स सपोज 2015 के अंदर लेट्स से अगर पाकिस्तान का CPI 300 होता तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस 2005 से 2015 यानी 10 साल के अंदर प्राइसेस ट्रिपल हो गई है. नाउ इफ आई वाज टू कैलकुलेट 2005 से 2006 का इन्फ्लेशन रेट, उसके बाद 2006 से 2007 का इन्फ्लेशन रेट, और फिर 2007 से 2008. Now this is not so easy the way it looks. You can't just do the difference. ये बहुत बड़ा एक कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं कि वो डिफरेंस देख लेते हैं. Now 5 से 6 तो आसान है. 5 से 6 is 100 से 103.6. That's a 3.6% inflation. That was easy to calculate. लेकिन 6 से 7 का कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है. You will have to use the percentage का formula. So in this case we're going to say 105.7 minus 103.6 divided by 103.6 into 100. ये तुमको yearly inflation निकाल के देगा for 6 and 7. So the inflation rate that I have calculated is 2.0, almost like I can say like rounding down 2% inflation आई है 6 से 7. If you do the difference, you're gonna get the answer wrong. उसका अगला साल निकाल के देखते हैं. 7 से 8 111.5 minus 105.7 divided by 105.7 into 100. The inflation rate comes out to be 5.5% inflation. So make sure that you don't just do the difference between the CPI. You have to use the formula of new minus old divided by old into 100. अगर पिछला साल बेस ईयर है तो वो तो 100 होगा. Easily you can just look at the difference. If it falls down below 100, you can know कि ये deflation होगा. So ये हमारा इंडेक्सेशन का मेथड है जो RPI और CPI की बेसिस है. Now the way the government works is, in a society, people uses various goods and services, और हर गुड्स के ऊपर लोग अलग अलग अमाउंट का खर्चा करते हैं. लोग अलग अलग टाइप के गुड्स कंज्यूम करते हैं. दाल में कई किस्म की दाल होती है, राइस में कई किस्म के राइस होते हैं, क्लोथिंग में कई किस्म के क्लोथिंग होती हैं, फ्रॉम द ब्रांड्स टू मिल्क के अंदर अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, स्कूल्स में अलग अलग स्कूल्स होते हैं, शैम्पू अलग अलग किस्म के होते हैं. तो इस तरह के इतने सारे गुड्स हो जाते हैं. So we have to make sure that we include consumers' expenditure on all types of goods and services, at least the ones which are normally used in your society. For example, अगर मैं मिल्क ब्रांड्स की बात करूं तो एक जो मिल्क शॉप के ऊपर मिलता है और दूसरा ऑलपर्स इज़ वन ऑफ द वेरी हाई सेलिंग. तो you should include ऑलपर्स in your CPI calculation because it's a commonly used product. अब लोग भी बहुत किस्म के हैं. You have people living in defense in Karachi, you have people living in Nazimabad, you have people living in Thar, you have people living in Hyderabad, up north in Kalam, so many cities in the country. और हर जगह गुड्स की प्राइसेस अपने हिसाब से चेंज हो रही होती हैं. बट द गवर्नमेंट कम्स अप विद वन इन्फ्लेशन रेट, and that single inflation rate should justify all goods, all kinds of consumers, locally and nationally. तो अब उसको हम कैसे डील करते हैं? तो CPI के मेथड के अंदर
This is how we do. I have narrowed it down to four major categories. Category number one, I have food, जिसके ऊपर में 3,000 का एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑफ द पीपल. Then you have clothing about 1,500. उसके बाद you have transport जिस पे $2,000 का खर्चा हो रहा है. And then you have other clothing जिसके ऊपर 2,500. वैसे तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज होनी चाहिए. But what I've done is I've narrowed it down to four major categories. और मैंने बेसिकली पाकिस्तान में तो बहुत लोग हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं, कराची में भी अच्छे खासे हैं, सिंध में ओवरऑल आई थिंक कम होने चाहिए पंजाब से ओवरऑल. बट द थिंग इज आई नीड टू टेक ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. तो मैं एक सैम्पल पॉपुलेशन उठाता हूँ विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीबडी इन पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान के 200 मिलियन लोगों के सैम्पल्स नहीं उठा सकता, तो मैं एक छोटा सा सैम्पल पॉपुलेशन उठाऊंगा और उसके साथ मैं वर्क करूंगा. अब इनके मैं प्रोपोर्शंस निकाल लेता हूँ, परसेंटेजेस. नंबर वन, आई विल लुक एट टोटल खर्चा कितना हो रहा है. 3,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500, सो दैट्स अबाउट 9,000 का टोटल खर्चा हो रहा है. $9,000 का टोटल एक्सपेंडिचर है. अब मैं इनको डिफरेंट वेट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी प्रोपोर्शंस में. वेट का मतलब होता है, ये जो वेट लिखा है यहाँ पे, ये कोई किलोग्राम्स नहीं है. ये जो वेट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये बेसिकली परसेंटेज या प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड रिप्रेजेंट करता है. परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर गुड. और यही परसेंटेज जो है, इसके वेरियस रीजंस हैं, वेरियस यूजेस हैं. एक, ये इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड बताता है. नंबर टू, ये पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इकोनॉमी के अंदर फूड को हम वेट दे रहे हैं 30%, तो इसका मतलब यह है कि एक एवरेज पाकिस्तानी का इनकम का 30% फूड पे जा रहा है, तो दैट मीन्स फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, अगर वो 30% से 31 चला जाता है, तो इससे मुझे पैटर्न पता लग जाता है कि नाउ पीपल आर स्पेंडिंग मोर परसेंटेज ऑन फूड. If it falls down to 25 and then 20, so that means people's incomes are going up and they're spending less on the food items. तो फूड का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 3,000 का एक्सपेंडिचर है और टोटल है 9,000, इंटू 100 कर लेते हैं तो परसेंटेज आ जाएगा. दैट्स अबाउट 33.3% ऑफ द मनी is being spent on food. Second, I can work out for transport, which is 1,500 divided by 9,000 into 100. So in transport, we're getting about 16.7%. उसी तरह से you can do it for clothing. और जब हम क्लोथिंग करेंगे तो we're going to take like 2,000 divided by 9,000 into 100, so we'll get about 22% in that. और फिर other goods के अंदर we'll take 2,500 divided by 9,000 into 100, we get about 28% rounding up. ठीक है? So let me list them down over here. जो मेरे आइटम्स हैं, ये CPI का मेथड है. आइटम्स के अंदर आई हैव फूड, आई हैव क्लोथिंग, आई हैव ट्रांसपोर्ट एंड आई हैव अदर गुड्स. I will copy the weights down.
फूड में वी गॉट 33.3, क्लोथिंग के अंदर वी हैड, sorry, I've made an error. This is clothing and this is transport. All right, so let me make that change, because 1500 से divide किया था, that was clothing, और 2000 से जो divide किया था, that's transport. That would definitely make our calculations wrong if I had taken that. 16.7 for this, 22 for this, 28 for this. Just to double check, I will get 100% over here. Total weight is 100% over here. Up, based on the information given to me, food की prices बढ़ी है 10%, clothing 15%, transport has fallen down, and household remained the same. Now look closely as to how I'm going to take these into account. Instead of just looking at 10% change, बेस ईयर में प्रोडक्ट को हम वैल्यू देते हैं 100 की. रिमेंबर दैट, 100 की वैल्यू. अगर 10% फूड में इन्फ्लेशन आई है तो उसका प्राइस इंडेक्स हो जाता है 110. क्लोथिंग के अंदर वी आर सीइंग 15% राइज हो रही है तो 115. ट्रांसपोर्ट में इट इज फॉलिंग, सो 100 माइनस 20, 80. एंड अदर गुड्स में इट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड, तो 100 ही रखेंगे because there was no change. फिर वेट इनटू प्राइस करके हम वैल्यूज निकालेंगे. तो 33.3 into 110 gives me 3663. फिर 16.7 into 115 gives me 1920.5. फिर उसके बाद you have 22 into 80, that's about 1760, and then 28 into 100 gives us 2800. Now once we have this information, we have to add all of these numbers, and when I add them up I get 10143.5. After you have the sum, this is called the sum of weight into price. ये जो हमने निकाला है weight into prices को यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है W into P, W into P, इन सब को अगर मैं टोटल कर देता हूँ तो 10143.5 we get. प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है, यू टेक दिस सम ऑफ वेट इनटू प्राइस एंड यू डिवाइड दिस होल थिंग बाय द टोटल weight. So from our numbers we have 10143.5 divided by 100, which was our total weight, which we calculated here. And on this basis I get a value of 101.435. So comparing with the base year, अगर last year it was 100, तो फिर इसका मतलब है कि 1.435% इन्फ्लेशन आई है. अगर ये डिफ्लेशन होता तो ये इंडेक्स तुम्हारा बिलो 100 आता. अगर ज़ीरो इन्फ्लेशन है तो ये 100 आ जाता. और now since we've done the math for it, now we're going to write the steps, the way we actually, how the government does it. There are about 6 steps that you should be able to write in case there is like a question on it. So we say steps to measure inflation. All right, so our first and the foremost important step is that we need to decide what type of goods and services do we take in our calculation. So we say let's select an imaginary
basket of goods and services which are commonly used in the society, commonly used in the society, economy, in the country. So they have to be very commonly used ones, all right? Because there are so many brands of so many goods, we don't want to take those brands which are not commonly used. Like for example, in milk, we say all-purpose is commonly used, so we should definitely take that in our calculation. The milk shop milk is definitely part of that. So stuff like that. Secondly, once we have selected the goods and services, we will then select a sample population, and this sample population is basically to do a survey of expenditure, because हम 200 million लोगों का तो हम survey नहीं कर सकते. It's impossible to know their expenditure and just carry out the whole calculation. So you select a sample population which is a representation of the total population Okay, so in this we include the gender, age structure, the regions, because Karachi, Lahore, Islamabad, and then there are other areas also, they have different expenditure patterns. मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स होते हैं. सो यू गोइंग टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम, ताकि जो तुम्हारे पास जो सैम्पल पॉपुलेशन आया है वो एक अच्छा सा सैम्पल पॉपुलेशन हो, एंड इट रिप्रेजेंट्स एवरीवन इन द सोसाइटी. Because if I let's just say take only people from defense, from the rich income side especially, तो उनके goods and services they're consuming will be different to a degree. Their expenditure patterns are going to be different. तो obviously फिर हमारे जो inflation के numbers आएंगे, that's just not going to make sense, right? So you want to make sure कि आपका sample population represents everyone in the society. Third, we select a base year which has a value of 100. Now ये जो base year होता है, it should be a normal economic year. रीजन बीइंग दैट अगर लेट्स सपोज ये कोई पॉलिटिकल ईयर हो जाता है, पॉलिटिकल ईयर में ज़्यादातर इन्फ्लेशन हाई होती है अनसर्टेनिटी के टाइम की वजह से. तो अगर तुम बेस ईयर के लिए ऐसा अनसर्टन ईयर ले लोगे, तो फिर उसके आगे के जो डेटास को तुम कंपेयर करोगे इस साल के साथ, देन योर नंबर्स आर नॉट गोइंग टू मेक सेंस अ लॉट. तो इसकी वजह से यू हैव टू हैव अ गुड वन. फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, you basically collect the expenditure data on the selected goods and services to calculate the weights. जैसे हमने ऊपर किया है, जिसी ऊपर हमने सारे एक्सपेंडिचर्स को लिया था, राइट अप देयर वी टुक डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, 15,000, 3,000, 2,000 and 2,500, and we took those and then we calculated these percentages. So आप ये weights calculate करते हो. weights
इम्पोर्टेंस बताते हैं गुड्स के बारे में, एक्सपेंडिचर पैटर्न्स बताते हैं. फॉर 2 marks you should know these two: importance and pattern. These are the keywords over here. Once we have this, once we have got the weights, we use the price index ka formula, which is step number 5, as you can see above also. So in step number 5, we use the RPI formula, which is you take the sum of the weight into price and you divide it by the total weight, and as a result you get an index. जैसे ऊपर आया था 101.435 का. And once you have this, you can calculate your yearly inflation, and the formula for yearly inflation was you take the new year's RPI, you minus the previous year's RPI, old year's RPI, divided by the old year's RPI into 100, and that's how you get the inflation rate. So the problem of having an imaginary basket of goods and services is it does not look at the quality. You might not be able to take all the brands in it, and sometimes जब आपने बेस ईयर 2010 लिया था, अब 2020 चल रहा है, पिछले कुछ सालों के अंदर डेफिनेटली न्यू प्रोडक्ट्स हैव आल्सो कम इन विच आर मिसिंग ओवर हियर. So there are some problems over here. Number 2, when you selected a sample population, it might not be 100% representation of it, because आपके पास consensus होने चाहिए. कंट्री के अंदर कंसेंसस एवरी ईयर, एक्यूरेसी उसमें वैसे भी एरर्स होते हैं जब आप इनकम ग्रुप्स और एज ग्रुप्स और जेंडर ग्रुप्स और रीजनल ग्रुप्स और पूरी पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक्स ले रहे होते हो, तो दे आर डेफिनेटली एरर्स, एंड दिस सैम्पल पॉपुलेशन माइट नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेशन. फॉर सम कंट्रीज अगर आपने गलत बेस ईयर ले लिया तो नेचुरली योर वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू शो द ट्रू पिक्चर, एंड ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज होती हैं. उसके बाद जब आप वेट इनटू प्राइस वगैरह कर रहे हो, ये जो प्राइस चेंजेस मैंने लिए थे, फूड के अंदर 10% प्राइस चेंज आया है, क्लोथिंग में 15% प्राइस चेंज आया है. ये जो प्राइस चेंजेस आ रहे हैं, द थिंग इज ये कौन सी मार्केट के प्राइस चेंजेस हैं? इज इट द होलसेल मार्केट? इज इट लाइक डिफेंस की किसी एरिया की मार्केट की प्राइसेस? बिकॉज डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्राइसेस भी होती हैं. आगाज़ की प्राइसेस it will be different from Imtiaz, and Imtiaz prices will be different from utility store, and their all prices will be different from utility. तो कौन सा price change उठा रहे हैं हम? That can be an error, and then obviously ये जो आपने data collection किया था, there can be errors in these data collection also, because people might not give you the actual or the proper data. ये तो हर survey के अंदर ये problems होते हैं, and all these calculations just might take too long. Data obsolete हो जाता है by the time the government releases it.